The Court turns next to the question of risk of irreparable prejudice and urgency. It notes that, pursuant to Article 41 of its statute, it has the power to indicate provisional measures when irreparable prejudice could be caused to rights which are the subject of judicial proceedings, or when the alleged disregard of such rights might entail irreparable consequences. However, the power of the Court to indicate provisional measures will only be exercised if there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights claimed before the Court gives its final decisions. The condition of urgency is met when the acts susceptible of causing irreparable prejudice can occur at any moment before the Court makes the final decision in the case. The Court must therefore consider whether such a risk exists at this stage of the proceedings. The Court is not called upon for purposes of its decision on the request for the indication of provisional measures to establish the existence of breaches of obligations under the Genocide Convention, but to determine whether the circumstances require the indication of provisional measures for the protection of rights under that instrument. As already noted, the Court cannot at this stage make definitive findings of fact, and the right of each party to submit arguments with respect to the merits remains unaffected by the Court's decision on the request for the indication of provisional measures. The Court recalls that, as underlined in General Assembly Resolution 96-1 of 11 December 1946, I quote, "Genocide is a denial of the right of existence of entire human groups, as homicide is the denial of the right to live of individual human beings. Such denial of the right of existence shocks the conscience of mankind, results in great losses to humanity in the form of cultural and other contributions represented by these human groups, and is contrary to moral law and to the spirit and aims of the United Nations." End of quote. In view of the fundamental values sought to be protected by the Genocide Convention, the Court considers that the plausible rights in question in this proceeding, namely, the right of Palestinians in the Gaza Strip to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3 of the Genocide Convention, and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligation under the Convention, are of such a nature that prejudice to them is capable of causing irreparable harm. During the ongoing conflict, senior United Nations officials have repeatedly called attention to the risk of further deterioration of conditions in the Gaza Strip. The Court takes note, for instance, of the letter dated 6 December 2023, whereby the Secretary General of the United Nations brought the following information to the attention of the Security Council. I quote, "The healthcare system in Gaza is collapsing. Nowhere is safe in Gaza. Amid constant bombarding by the Israel Defense Forces and without shelter or the essentials to survive, I expect public order to completely break down soon due to the desperate conditions rendering even limited humanitarian assistance impossible. An even worse situation could unfold, including epidemic diseases and increased pressure for mass displacement into neighboring countries. We are facing a severe risk of collapse of the humanitarian system. The situation is fast deteriorating into a catastrophe with potentially irreversible implications for Palestinians as a whole and for peace and security in the region. Such an outcome must be avoided at all costs." End of quote. On 5 January 2024, the Secretary General wrote again to the Security Council, providing an update on the situation in the Gaza Strip and observing that, I quote, "Sadly, devastating levels of death and destruction continue." End of quote. The Court also takes note of the 17 January 2024 statement issued by the UNRWA Commissioner General upon return from his 4th visit to the Gaza Strip since the beginning of the current conflict in Gaza. I quote, "Every time I visit Gaza, I witness how people have sunk further into despair, with the struggle for survival consuming every hour." End of quote. The Court considers that the civilian population in the Gaza Strip remains extremely vulnerable. It recalls
that the military operation conducted by Israel after 7 October 2023 has resulted inter alia in tens of thousands of deaths and injuries and the destruction of homes, schools, medical facilities, and other vital infrastructure, as well as displacement on a massive scale. The court notes that the operation is ongoing and that the Prime Minister of Israel announced on 18 January 2024 that the war, I quote, will take many more long months, end of quote. At present, many Palestinians in the Gaza Strip have no access to the most basic foodstuffs, potable water, electricity, essential medicines, or heating. The World Health Organization has estimated that 15% of the women giving birth in Gaza Strip are likely to experience complications and indicates that maternal and newborn death rates are expected to increase due to the lack of access to medical care. In these circumstances, the court considers that the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip is at serious risk of deteriorating further before the court renders its final judgment. The court recalls Israel's statement that it has taken certain steps to address and alleviate the conditions faced by the population in the Gaza Strip. The court further notes that the Attorney General of Israel recently stated that a call for intentional harm to civilians may amount to a criminal offense, including that of incitement, and that several such cases are being examined by Israeli law enforcement authorities. While such steps are to be encouraged, they are insufficient to remove the risk that irreparable prejudice will be caused before the court issues its final decision in the case. In light of the foregoing, the court considers that there is urgency in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the court to be plausible before it gives its final decision. The court concludes on the basis of the aforementioned considerations that the conditions required by its statute for it to indicate provisional measures are met. It is therefore necessary, pending its final decision, for the court to indicate certain measures in order to protect the rights claimed by South Africa that the court has found to be plausible. The court recalls that it has the power under its statute, when a request for provisional measures has been made, to indicate measures that are in whole or in part other than those requested. In the present case, having considered the terms of the provisional measures requested by South Africa and the circumstances of the case, the court finds that the measures indicated need not be identical to those requested. The court considers that, with regard to the present situation, Israel must, in accordance with its obligations under the Genocide Convention, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. The court recalls that these acts fall within the scope of Article 2 of the Convention when they are committed with the intent to destroy in whole or in part the group as such. The court further considers that Israel must ensure with immediate effect that its military forces do not commit any of the aforementioned acts. The court is also of the view that Israel must take measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip. The court further considers that Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Israel must also take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention,
against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Regarding the provisional measure requested by South Africa that Israel must submit a report to the court on all measures taken to give effect to the order, the court recalls that it has the power, reflected in Article 78 of the Rules of Court, to request the parties to provide information on any matter connected with the implementation of any provisional measures it has indicated. In view of the specific provisional measures it has decided to indicate, the Court considers that Israel must submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of this order. The report so provided shall then be communicated to South Africa, which shall be given the opportunity to submit to the Court its comments thereon. The Court recalls that its orders on provisional measures under Article 41 of the statute have binding effect and thus create international legal obligations for any party to whom the provisional measures are addressed. The Court reaffirms that the decision given in the present proceedings in no way prejudges the question of the jurisdiction of the Court to deal with the merits of the case or any questions related to the admissibility of the application or to the merits themselves. It leaves unaffected the right of the governments of the Republic of South Africa and the State of Israel to submit arguments in respect of these questions. The order then states that the Court deems it necessary to emphasize that all parties to the conflict in the Gaza Strip are bound by international humanitarian law. It is gravely concerned about the fate of the hostages abducted during the attack in Israel on 7 October 2023 and held since then by Hamas and other armed groups, and calls for their immediate and unconditional release. I shall now read out the operative part of the order. For these reasons, the Court indicates the following provisional measures. 1. By 15 votes to 2, the State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebatinde, Judge Ad hoc Barak. By 15 votes to 2, the State of Israel shall ensure, with immediate effect, that its military does not commit any acts described in point 1 above. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sebatinde, Judge Ad hoc Barak. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judges Ad hoc Barak, Moseneke. Against, Judge Sebatinde. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip.
In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judges Ad hoc Barak, Moseneke. Against, Judge Sabatinde. By 15 votes to 2, the State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sabatinde, Judge Ad hoc Barak. By 15 votes to 2, the State of Israel shall submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of the order. In favor, President Donahue, Vice President Gevorgian, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Youssef, Shway, Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brandt, Judge Ad hoc Moseneke. Against, Judge Sabatinde, Judge Ad hoc Barak. I shall now call upon the Registrar to read the operative part of the order in French. Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes suivants. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 2. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus. Pour Madame Donoghue, présidente, Monsieur Gevorgian, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benuna, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charlesworth, Monsieur Brand, juge, Monsieur Moseneke, juge ad hoc. Contre, Madame Sebutinde, juge, Monsieur Barak, juge ad hoc. 3. Par 16 voix contre 1, l'État d'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर आलमी अदालत का फैसला। जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत इसराइल गजा में फौरी कत्लेआम रोकने के लिए इकदाम करे। इसराइल गजा में फौरी तौर पर बुनियादी सहूलतें बहाल करे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर इसराइल से 1 माह में इकदाम पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली है। इसराइल जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 2 के तहत इकदाम करे। 17 में से 15 जजेस के मुताबिक इसराइल जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 2 के तहत इकदाम करे। 17 में से 16 जजेस के मुताबिक गजा में इंसानी बुनियाद पर फौरी सहूलतें फराहम की जाएं। 17 में से 15 जजेस के मुताबिक इसराइल नस्लकुशी रोकने के इकदाम पर रिपोर्ट 1 माह में जमा कराए।
जी हाँ, आलमी अदालत इंसाफ के 17 जजेस के पैनल ने फैसला सुना दिया है। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। हमास के हमले के बाद इसराइल ने हमला किया जिससे मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए। ये इल्म है कि गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसराइल हमलों में गजा में बड़ी तादाद में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। जनूबी अफ्रीका ने आर्टिकल 36 और 39 के तहत दरख्वास्त दी। गजा के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के कई इदारों ने करारदादें भी पेश की। जनूबी अफ्रीका ने इल्ज़ाम लगाया इसराइल ने जेनोसाइड कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। जेनोसाइड के हवाले से जनूबी अफ्रीका ने इसराइली दस्तावेज पेश की। इसराइल ने जेनोसाइड सेक्शंस की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात की तरदीद की। गजा में मुसलसल जानी नुकसान बायस तशवीश है, ये कहना है आलमी अदालत इंसाफ का। जनूबी अफ्रीका ने इल्ज़ाम लगाया इसराइल ने नस्ल कुशी पर जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। जनूबी अफ्रीका ने इल्ज़ाम लगाया इसराइल ने बज़ाहिर जनूबी अफ्रीका का मुकदमा चलाया जा सकता है। इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुकदमे पर कार्रवाई चलाई जा सकती है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में जलसे के शुरका से खिताब कर रहे हैं। कहते हैं कि थरपारकर का मंसूबा का बानी नवाज शरीफ, ये अब अवाम को बेवकूफ नहीं करवा सकते हैं। अब अवाम जान चुके हैं कि क्यों गली गली में शोर है। साथियों, हम तो इनके साथ अब नहीं चल सकते। मैं इनके साथ तो नहीं चल सकता हूं। अब पाकिस्तान के अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं। आप ये रायबंद वाले समझते हैं कि इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, इन्होंने हमारे अपने मुखालिफ का बंदोबस्त कर लिया है, घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करे, अगर हम सोच समझ के वोट डाले, वोट जाया ना हो, किसी तीसरी निशान पे, किसी इंडिपेंडेंट के निशान पे है वही जाया ना करे, अगर ये मुल्क के अवाम तय करे कि हमने इसका रास्ता रोकना है, चौथी बार नहीं बनने देना, तो फिर एक ही तरीका है। जबकि मुकाबला अब रहा सिर्फ तीर और शेर के दरमियान, तो हम पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वोट जाया ना करे, तीर पे थप्पा लगाए, तीर पे मोर लगाए, हम मिलके इस शेर का शिकार करते हैं। क्या मुल्तान के अवाम शेर का शिकार के लिए तैयार है? मेरे बहनों, अब शेर के शिकार के लिए तैयार है? तो फिर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर का शिकार होगा, तीरों का बारिश होगा तो शेर का शिकार होगा, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपकी होगी। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जनूबी पंजाब का अवाम का होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आला पंजाब जनूबी पंजाब से बनाऊंगा। मैं वजीर आजम पाकिस्तान आपकी वोटों के साथ, आपकी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आजम पाकिस्तान का ओहदा भी संभालूंगा। मुल्तान के अवाम को मालूम है कि जब हम कोई बात तय करते हैं तो वो बात हम फिर करके दिखाते हैं। लोग कहते थे ना कि खान साहब तो 10 साल के लिए वजीर आजम रहेगा। लोग कहते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान कहते थे कि आप जो है ये सेनेट में क्या कर रहे हो, आप सेनेट में कैसे नहीं आ रहे। अज़ार हो रहा है, इसके बाद मैं 5 मिनट के लिए बात करूंगा, फिर आपको खुदा हाफ़िज़। मुल्तान में पीपल्स पार्टी का जलसा, बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा साथ दें, नफरत और तकसीम की सियासत खत्म कर देंगे। पुराने सियासतदानों ने सियासत को ज़ात दुश्मनी में बदल दिया। गुर्बत का खात्मा करके तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएंगे। पाक फौज और पुलिस की कुर्बानियों से दहशतगर्दों को खत्म किया। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। एक जमात ने मुआशरे और इदारों को तकसीम किया। हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वाहिद लीडर हूँ जो पूरे मुल्क में जलसे कर रहा हूँ। कुछ लीडरों का मकसद चौथी बार कुर्सी पर बैठना है। मैंने अपने हाथों से मौशी मुआहदा मुरतब किया है। दूसरी जानिब मनाजिर देख रहे हैं आप, मुजफ्फरगढ़ के ये मनाजिर है। मौलाना फजलुर रहमान जलसे के शुरका से खिताब कर रहे हैं। आलम कुफर के सामने आज हमारे हाथ फैले हुए हैं। हमारे इन हुक्मरानों की
कुरान और सुन्नत से दूरी की बुनियाद पर। जमीयत उलमा इस हवाले से कौम की रहनुमाई करना चाहती है। और दूसरी जानिब मुल्तान में बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे हैं। लोग समझते थे कि हम नहीं कर सकते थे, और हमने उन सबको गलत साबित कर दिया। और इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली से, जहां से खान साहब का 172 का अक्सरियत होना था, वहां हमने उनके घर में घुस के उनको मारा और सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब किया। कहते थे कि आपका एतमाद कामयाब नहीं हो सकता। जो लोग हमारे साथ थे वो तो असेंबली से इस्तीफा देने के चक्कर में थे। हमने कहा था और हमने वो अदम एतमाद कामयाब करवाया। जो वजीर आजम बने वो तो शायद भूल चुके हैं, मगर आपकी मेहनत के बगैर वो नहीं बन सकते थे। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हमने तय करना है। फैसला करो कि 8 फरवरी को आपने तीर पे थप्पा लगवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाना है। तो फैसला हो गया है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को तीरों की बारिश, 8 फरवरी को जीत आपकी होगी, जीत मुल्तान की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। सबके निशान तीर है। बहुत सारे माशाल्लाह इस बार इतने सारे कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनूबी पंजाब के, सबका निशान तीर है। आपने ना सिर्फ अपने तमाम खानदान को, आपने सारे साथियों को भी इस बात पे मनाना है कि वोट जाया ना करे। जज्बाती नहीं, सोच समझ के वोट डाले। तीर पे थप्पा होगा तो शेर का शिकार होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग वाले समझते हैं कि उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। नून लीग वाले घर से भी नहीं निकल रहे। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। आवाम से कहता हूं मिलकर शेर का शिकार करते हैं। पंजाब का वजीर आला जनूबी पंजाब से बनाऊंगा। लोग कहते थे बानी पीटीआई 10 सालों के लिए वजीर आजम है। बिलावल भुट्टो ने कहा मोटरवे में चोरी करके एवन फील्ड के अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। नवाज शरीफ कहता है कि वो सी पैक का बानी है। सी पैक का मंसूबा आसिफ जरदारी का था। तुम सी पैक के चोर हो। दूसरी जानिब आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरगढ़, जहां मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब कर रहे हैं। आप लोग अपने वो इस्तेमाल करते हैं।